Sir, other difference is that first order system didn't have
Now, if we separate these roots, we can get minus c over 2m and plus minus under root c squared minus 4mk divided by 2m. Now, of course, this part of the root will always be real part, and this part of the root has the potential to either be imaginary part or a real part. Okay? इस बात की आपको समझ आ रही है? For example, if there is any value, so for example, I mean, the reason that this part can be either imaginary means that it can have iota, or it may not be imaginary. It depends if c square value is greater than 4mk. If the positive value, which is c square, if the positive value is greater than 4mk, then c square minus 4mk will be a positive value, and the radical of that positive value will be some real value, not imaginary value. It will not contain iota. But if 4mk, which is a negative value, is greater than c square value, then the algebraic sum of c square minus 4mk will result in a negative value, and the under root of that negative value will result in imaginary iota. ठीक है? इस बात की समझ आ रही है? Students, everyone, if anyone have confusion, you can ask me. This is very important point. ठीक है? Okay. Now understand that the system will only have oscillation, that the system response will only have oscillation if this component is result in iota value, in some constant multiply iota value. Now this will only happen if c square value is less than 4mk. So and the system oscillation happens. So a second order system can have 4 different types of responses: undamped response, underdamped response. In these two responses, the system oscillates. This is undamped response, and this one is damped response. For the first 2 types of responses, the system oscillates, and it oscillates because this 4mk value is greater than c square. For example, if it is an undamped system where c is equal to 0, if c is equal to 0, then this term becomes equal to 0, and that means that we are left with minus 4mk, and the minus sign inside the radical results in iota, and we end up with a system response like that, which is an undamped system because c value is 0. On the other hand, if c value is not equal to 0, but it is still c square value is still less than, in terms of magnitude, quantitatively, it is less than minus 4mk, or it is less than 4mk quantitatively, then again we will end up with a negative value inside the radical, and we will end up with a imaginary component, imaginary value containing iota. In this case, our response will be like this: a gradually decreasing or decaying, this is the proper word, is decaying, a gradually decaying response of the system. Now, so these are the first 2 cases. Case number 1 is undamped response. Sir, is the imaginary, if the root is complex, then we can will be the response gradual, or it will be abrupt? The response, if the roots, what do you mean by gradual or random response will be there, or it will be a gradual sinusoidal or cosine wave, something like that, which repeats? It will depend, but typically for a second order system, if it is
in the absence of external force means अगर आप spring mass damper को initial disturbance दे दें and then let it oscillate, assuming that its damping value is small, is less than critical damping, and let it oscillate, then the response of the system will be a sinusoidal response. Okay? It will not be like this. Here this is a random response. Okay? The response that I drew a little while ago, these two responses, they do not, because of my poor drawing skills, they do not look like perfect sinusoidal response, but they are. Okay? Does that answer your question? Yes, sir. Okay? So your typical response will be something like this. Okay? Sir, what if our roots are positive, I mean real numbers, sir, then we won't have any response? If we have real roots, that means that this whole part is equal to 0, only this part. This is the condition, when this part become equal to 0, this is the condition of critical damping. In which case, we will have a response, but it will be critically damped response. So our response will be something like this. Okay? You're seeing a response, but there is no oscillation. The response just go up to one extreme and then come back to 0 point. It doesn't cross the 0 point. It doesn't oscillate across the 0 magnitude. समझा रही है student? And sir, can you please give an example of first order system equation for that first order system? We are right now discussing second order system. Oh, okay, sir. Okay, we are discussing second order system. अभी हम first order system discuss नहीं कर रहे. We are discussing second order system, which is a spring mass damper system, and this spring mass damper system has a transfer function which is g of s is equal to 1 over ms square plus cs plus a. Since the denominator polynomial is of degree 2, s की power 2 है, therefore it's a second order transfer function. Okay? Now, when this term become equal to 0, okay, we say that the system is critically damped. Okay? If this term is not equal to 0, but it is real, if this term is not equal to 0, but it is real, okay, हो सकता है ना? When would this term be not equal to 0? And it will not contain iota value. कोई बता सकता है? Any student? This And when c square is greater than 4mk. Yes, when c square is greater than 4mk, then this will result in a non-imaginary iota value. ठीक है? So let's do some numerical calculations, okay? Because this is important to understand the response of a system. So I have the same. किसी के पास calculator है? Anyone has a calculator? Students? Yes, sir. Okay. So I'll need your help to calculate some roots. Okay? So this will be our response plot, which is x of t. किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, उनकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही थी. अच्छा, मुझे अच्छी तरह सुनाई नहीं दी आपका क्वेश्चन. किसी और को सुनाई दिया है स्टूडेंट का क्वेश्चन? Can anyone else rephrase it for me? So that question was, I think, how is the first order system response? I think that was the question. Okay. Okay.
अच्छा, okay, I get your question. You're saying if the roots are positive, will there be no oscillation? The answer, simple answer, but I will explain in detail in a moment. But the simple answer is that the oscillation doesn't depend whether the roots are positive, or you mean like the under root is positive. Yes, if the under root is, if the radical inside the quadratic formula is a positive value, means it's a non-iota value, then the system will not have any oscillation. The answer to your question is yes. If the radical, the value inside the radical, which is c square minus 4 mk, if this value, c square minus 4 mk, comes out to be a positive value, and you take the under root of that positive value, that means that since it's under root of positive value, it will not result in iota. And since there is no iota, that means it's not an imaginary value. Therefore, it will not, the system will not oscillate. So just by looking at the roots of the system, you can tell whether it will oscillate or not. Okay? Okay. So let's do a numerical example. Okay? Let's say my transfer function is, mass value is 1 s square, c value is 2s, and k value is 3. Okay? So my transfer function is 1 over s square plus 2s plus c. Now the characteristic equation for this system will be s square plus 2s plus 3 equal to 0. Sir, should I give you the roots directly, sir? Kya note? Sorry? So the roots are I'll ask you. I'll ask you. You can give me. I need to do some. I need to write some formula, and then I will ask you that what is the value of the roots. Okay. So since it's a second order equation, you can see that s is raised to the power 2. Therefore, there will be 2 roots. It's a quadratic equation. Okay? And the 2 roots, we can write them s1 comma s2. And 1 comma 2 means that it is s1 and s2. So s1 comma s2 is minus 2 plus minus, because okay, 2 square minus 4, m value is 1, and c value in this particular case is 3, divided by 2 into m value is 1. ठीक है? यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को इशू है क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करके उसके रूट्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये फार्मूला तो सबको याद है कि s1 comma s2 for this case is minus c plus minus c square minus 4mk divided by 2m. ठीक है? Any issues so far, students? No, sir. Okay. So let's see. Let's start with the very basic, the very first condition. Let's assume our c value is equal to 0. Let's assume that c value is equal to 0. If c value is equal to 0, then this thing becomes equal to 0, and this also becomes equal to 0. Okay? Now, if we do that, then it comes out to be 0 over 2 plus minus under root minus 12 divided by 2. That means that the first root is s1 is equal to 0, 0 plus under root 12 by 2, and the second root is 0 minus under root 12 by 2. ठीक है? Now, under root minus 12 by 2 नहीं होगा? minus 12 by 2. अच्छा, अब 12 का under root क्या बनता है? 2 under root 3.
नहीं एग्जैक्ट जरा डेसिमल वैल्यू क्या बनेगी इससे? S1 की वैल्यू क्या होगी? प्लस समथिंग आयोटा होगी ना स्टूडेंट? 3.446 आयोटा। और सेकंड रूट की वैल्यू क्या होगी? माइनस 3.46 आयोटा। अच्छा नाउ वी विल साइज नीचे 2 भी है ना सर, वो आपने इग्नोर कर दिया। अच्छा वो मैं सोच रहा था कि आपने उसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड सर 1.73 आता है सर। 1.73 plus 1.73 and minus 1.73. ठीक है? Iota. So two roots. Now let's plot these two roots on the complex plane. ठीक है? This is real. This is not the response plot. This is the pole zero plot. इसे कहते हैं. ठीक है? Roots plot. And this is the imaginary plot. ठीक है? Now this root, ठीक है? S1 को अगर मैं प्लॉट करूं तो इसके रियल एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है? रियल एक्सिस पे वैल्यू इसकी क्या है? 0 है ना, यहाँ पे आएगा रियल एक्सिस पे। और इमेजिनरी एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है? 1.7 माइनस 1.73, ठीक है, प्लस 1.73 पहले S1 के लिए। तो यहाँ पर मैं एक क्रॉस लगा दूं, ठीक है। और सेकंड जो रूट है उसकी वैल्यू क्या है? माइनस, रियल पार्ट तो 0 है ना, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस 1.73। ठीक है, ये मेरे पास दो रूट्स आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक? यस सर, क्लियर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो प्लॉट है, दिस वन, दिस इज द रिस्पांस प्लॉट। नीचे वाला प्लॉट है, इसके रिस्पांस के साथ, मतलब दिस डजंट शो द रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। ये जो आपके पास रूट्स आ रहे हैं सिस्टम के, उन रूट्स को आपने एक इमेजिनरी प्लेन पे प्लॉट कर दिया। इमेजिनरी प्लेन कैसा है? इमेजिनरी प्लेन इज जस्ट लाइक द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में x और y होते हैं आपके पास, x एक्सिस और y एक्सिस होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम रियल वैल्यू प्लॉट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम इमेजिनरी वैल्यूज प्लॉट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रूट हो जिसकी वैल्यू हो S1 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा। अब इसको यहाँ पर कैसे प्लॉट करेंगे इस पर्टिकुलर? फॉर एग्जांपल दिस इज -1 and this is, let's suppose, -3। तो ये दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर मैं एक क्रॉस लगा दूं, and this cross represent S1 is equal to -2 plus 3 iota। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट? यस सर। सिंपल, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे हम XY की वैल्यू डाल के किसी भी पॉइंट को नोट करते हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम रियल और इमेजिनरी वैल्यू डाल के किसी भी रूट की वैल्यू को नोट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, आई हैव टू पोल्स। ठीक है, S1 एंड S2। इसको मैं पोल्स क्यों कह रहा हूँ, रूट क्यों नहीं कह रहा, पोल्स क्यों कह रहा हूँ? स्टूडेंट्स, एनीवन? इसको पता है? पोल्स और जीरोस हमने डिस्कस किया। हाँ, देखिए जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हाँ जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं उनको हम पोल्स कहते हैं, और जो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल होता है उसके जो रूट्स होते हैं उसको हम जीरोस कहते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले एक लेक्चर में डिस्कस किए थे। Now the denominator polynomial roots
are plus 1.73 iota and minus 1.73 iota. ठीक है? Now the response of this system will have pure oscillation. It will have pure oscillation. ठीक है? And there is no decay. कोई decay नहीं हो रहा. Decay कैसे होता? That would have been a decay. अगर आप देखें, there is a decay. System का response gradually magnitude wise कम हो रहा है. That is called decay. ठीक है? आपका ये वाला portion जो है, this portion of the root, that controls decay. ठीक है? जितना ये इसका magnitude ज्यादा होगा, उतना ये तेजी से decay करेगा. ठीक है? And this portion स्लाइड्स नजर नहीं आ रही. slide नजर नहीं आ रही. और सुनिए, सर आ रही है स्लाइड नजर. सर इसने पिन नहीं किया होगा. अच्छा, सर हमें थोड़ा सा मीटिंग के कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो. आप स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन कर लें जिनको नजर नहीं आ रही. स्टूडेंट सर वो दोबारा ज्वाइन कर. हो रहा है सर. सर इसमें रियल पार्ट रेट ऑफ डीके को शो कर. एग्जैक्टली. ठीक है, लेकिन जैसे अनडैम्प्ड सिस्टम जो है, ये वाला सिस्टम जो है, इसमें कोई डीके नहीं है. ठीक है, ये जो जिसमें मैग्नीट्यूड कम नहीं हो रहा, उसकी रीजन ये है क्योंकि देखिए हमारे पास ये रियल पार्ट जो है वो जीरो है. क्योंकि अगर रियल पार्ट जीरो है देन देयर विल बी नो डीके. यस सर. ठीक है, अच्छा वो स्टूडेंट ज्वाइन कर गया. यस सर. ये बता दें पॉइंट वाली ग्राफ. अच्छा, मैं इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ. ये देखें, क्योंकि हमारे पास इस ग्राफ में अगर आप देखें तो इसमें कोई डिके नहीं हो रहा. डिके का मतलब ये है कि ईच सक्सेसिव ऑसिलेशन में मैग्नीट्यूड में कोई कमी नहीं आ रही. ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड उतना ही है जैसे पहले ऑसिलेशन में था. ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अनडैम्प्ड सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर डिके नहीं आ रहा. इसका रिस्पांस जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस नहीं हो रहा. इसका मतलब ये है कि अगर एक पेंडुलम है, उसको आपने इनिशियली एक ऑसिलेशन दे दी है, तो वो क़यामत तक उसकी ऑसिलेशन उतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर डैम्पर मौजूद नहीं है. दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड अनडैम्प्ड सिस्टम. और रूट को देख के आप बता सकते हैं, रूट में अगर ये वाला पोर्शन जो रियल पार्ट है रूट का, इफ दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो, फोर्स का जो रियल पार्ट है, इफ दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डिके का जो वो वाला न्यूमेरिकल कंपोनेंट ऑफ द रूट जो कि डिके को एस्टेब्लिश करता है, वो जीरो हो गया. तो इस सिस्टम के रिस्पांस में कोई डिके नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर. ठीक है. अच्छा, अब ये जो 1.73 है ना, इसकी यूनिट आपको पता है, इसकी यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड. अब ये वाली जो आपके पास ऑसिलेशन आ रही है, ठीक है, ये जो ऑसिलेशन आपको नजर आ रही है, इस ऑसिलेशन की आप फ्रीक्वेंसी अगर मालूम करेंगे, वो एग्जैक्टली 1.73 रेडियन पर सेकंड होगी. So now you can realize that by looking at the roots, you can tell how the system will respond. ठीक है, students? 1.7. Sir, what about the imaginary part? I didn't understand that part, sir. Can you just explain once, sir? This is the imaginary part. Yes, sir. What does it show? It shows the frequency of the system, frequency of oscillation of the system, Frequency of the oscillation. of the system response. किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा. अगर ये कंपोनेंट जीरो के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम की कोई ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ही नहीं है. मतलब सिस्टम का रिस्पांस होगा लेकिन वो ऑसिलेट नहीं करेगा.
ऑसिलेट का मतलब है कि वो वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है, बैक एंड फोर्थ नहीं जाएगा अक्रॉस द जीरो मैग्नीट्यूड. Any other questions, students? ठीक है. अच्छा, now let me erase this thing. Now let's say we introduce a damping value. A small damping value of C that is greater than 0. So let's say I introduce it as 1. Even maybe 2. Now the poles S1, 2 will be equal to -2 plus minus 2 square minus 4 into 1 into 3 divided by 2 into 1. ठीक है. Now this will be equal to -2 divided by 2 plus minus under root 4 square minus 12 divided by 2, which will be equal to -1 plus minus 16 minus 12. No, sorry, 4 minus 12. I forced it. 4 minus 12. So this will be minus 12 by 2. Sorry, minus not 12. minus 8 by 2. ठीक करो ना. अच्छा, मुझे इसके सर रूट्स बता दें, इसके रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? मतलब इस अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेटर से मालूम करके दे दें. -1 प्लस माइनस सर 1.4 होगी. 1.4 iota. ठीक है. Now if we plot these two poles, ये दो poles की वैल्यू क्या है? S1 is equal to -1 plus 1.442 iota है, and S2 is equal to -1 minus 1.42 iota. ठीक है. Now let's plot these two values on the complex plane. Complex plane पे plot करते हैं. ये हमारे पास real positive है. This is real positive. This is imaginary positive. ठीक है. Of course, this is imaginary negative, and this is real negative. So for the first pole value will be -1. Assume this is -1 and 1.1 plus 1.42 iota. Okay. Yeah, or simply 1.42 because it's imaginary. We know that, say, iota axis. And so our first pole will be intersection of these 2 points, and this corresponds to -1 plus 1.42 iota. Second will be -1 for the second pole. It is -1, same value -1, but the imaginary part is now -1.42. So this will be my second root. In all, this is how the system will look like. ठीक है. अब मैंने आपसे चंद क्वेश्चन पूछना. Question number 1. Will the system oscillate? आप इस complex plane को देख के और roots को देख के आप मेरी बात का जवाब दे सकते हैं. Will the system response oscillate? Answer: yes. Yes. What will be the system? What will be the system response oscillation frequency? वो क्या होगी? 1.4.
1.42 रेडियन पर सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी होगी. वेरी गुड. नेक्स्ट, will this oscillation decay with respect to time? यस सर. ठीक है. अच्छा, और वो क्यों, आपको कैसे पता चला कि ये डिके होगा? क्योंकि -1 वैल्यू है रियल पार्ट. डैम्पिंग बिल्कुल, ये -1 वैल्यू है. ठीक है. And there is a damper. Now, the response of this system will be something like this. ठीक है. Now, if you can see that it is oscillating, ये response अगर आप देखें, it is oscillating, but with each successive oscillation, its magnitude of oscillation decays. और अगर मैं तमाम पीक को एक स्मूथ कर्व की मदद से ज्वाइन कर लूं, तो ये हमारे पास डिके फंक्शन आ जाएगा. और ये बेसिकली किस चीज के बराबर है? e raised to the power -1t. ये -1 कहां से आया? ये वाला है. समझ आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर. ठीक है. सो दिस डिके, अगर आप पीक को ज्वाइन कर लें, पीक को अगर आप एक स्मूथ कर्व की मदद से ज्वाइन कर लें, तो ये जो कर्व बनेगी, दिस विल बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, या मैथमेटिकल फॉर्म जो होगी, e raised to the power -1t. ये -1t मुझे कैसे पता चला, कहां से आया? ये इसके बराबर. अगर यहाँ पर -5 लिखा होता तो ये होता e raised to the power -5t होता. समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट्स? यस सर. अच्छा, नाउ जस्ट हमने ये लिया है सर, जी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने क्यों लिया है सर इसमें? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है कि अगर आप इस डिके को देखें तो डिके की जो फॉर्म है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. ठीक है. डिके की जो फॉर्म है ना, ये देखें, ये आपको नजर आ रही है? यस सर. ये डिके हो रहा है ना, और ये इसके ऊपर जो है, सर अगर हम इसके पीक को ज्वाइन कर ले एक स्मूथ कर्व की मदद से, तो ये जो कर्व की जो इक्वेशन होगी, अगर आपने कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्लॉट किया होगा, तो उसकी यही फॉर्म होती है, -st. ठीक है, ये फॉर्म है उसकी. ठीक है सर. ठीक है. ये हम ये कह रहे हैं कि ये डिके, देखिए डिके लीनियर भी हो सकता है. अगर डिके यूं होता ना, यूं, मिसाल के तौर पे डिके यूं होता, मिसाल के तौर पे मैं पहले एक लीनियर फंक्शन प्लॉट कर लूं, यूं. अगर डिके यूं होता तो हम कहते हैं कि ये डिके जो है, ये लीनियर डिके है, मतलब ये एक फिक्स अमाउंट से डिके हो रहा है. ठीक है. लेकिन जो रियलिटी में जो सिस्टम है, वो लीनियर डिके नहीं होता. शुरू में थोड़ा कम है, फिर मतलब शुरू में ज्यादा है, फिर थोड़ा कम है, फिर थोड़ा कम है, फिर थोड़ा कम है. हर पीक पे, हर दो पीक के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, वो एक कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, बल्कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से वो डिके हो रहा है. आप समझ आ रही है? यस सर. ठीक है. और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिके, देखिए मैं आपके सामने, लेट मी ड्रॉ अ फ्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए. सो लेट्स पुट इन इंसर्ट न्यू स्लाइड. देखिए अगर ये वाला फंक्शन हो, e raised to the power t, ठीक है, तो ये फंक्शन, इस फंक्शन की फॉर्म ये है, e raised to the power 0 जो है 1 से स्टार्ट होगा ना, ये इसकी फॉर्म. This is e raised to the power +1t. ठीक है. If you have a exponential function, चलिए मैं जरा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ ताकि हमारे मिसाल के तौर पे ये 1 है. So this is an exponential function of e raised to the power +1t. If you have an exponential function e raised to the power -1t, तो उसकी फॉर्म जो है ये हो. ठीक है. ये, so this is +1t and this is e raised to the power -1t. ठीक है. अब वापस हम आते हैं कि जब when you look at the
ये एक टिपिकल रिस्पॉन्स है, एक अंडरडैम्प्ड second order system का response है. When you look at the second order underdamped system response, then you realize कि भाई जो एक पीक से दूसरे पीक के दरमियान और दूसरे से तीसरे पीक के और तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें और छठे पीक के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो लीनियर डिफरेंस नहीं है, वो एक फिक्स डिफरेंस नहीं है, बल्कि वो एक एक्सपोनेंशियल कर्व से डिफाइन हो सकता है ये डिफरेंस. सो इसलिए हम इसे कहते हैं कि दिस इज एन नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिके. समझ आ रही है इस बात की आपको? यस सर. ठीक है. नाउ I want to ask you another question. Let's talk about roots complex plane. So this is my complex plane. This is real positive, and this is imaginary positive. Okay. If I have two roots here, what kind of response? First of all, question number one, what is the order of this system if you see two poles on the complex plane? Its order kya hoga? It's a second order system. Now, a second order system can have four different types of responses. It can have undamped response, it can have underdamped response, it can have critically damped response, and it can have overdamped response. And my question to you is, looking at the pole location, this is S1, this is S2. Looking at the poles location, can anyone tell me what kind of response you are expecting out of the four different types of response? Underdamped, undamped, critically damped, and overdamped. Sir, ये undamped response है. This will be an undamped response. Undamped response का मतलब क्या है कि कोई for example, this will हमारे पास oscillation है, और oscillation में कोई decay नहीं होगा. Means हर successive oscillation का amplitude exactly वही होगा जो कि पहली oscillation का था. ठीक है. अच्छा, अगर तो मैं ये कहूँ कि भाई ये poles यहाँ पर नहीं है, imaginary axis पे नहीं है. They are not on the imaginary axis. Rather, they are in the complex plane. अगर S1 complex plane के अंदर है, S1 and S2, तो इसका मतलब है कि दोनों poles का एक negative real part है और दोनों pole का जो है दोनों poles का जो है हमारे पास imaginary part, imaginary component भी मौजूद है. ठीक है. So इसका मतलब ये है कि ये जो अभी जो S1 और S2 की वैल्यूज हैं, अभी जो S1 और S2 पोल हैं, इसका रियल कंपोनेंट भी मौजूद है और इमेजिनरी कंपोनेंट भी मौजूद है. इमेजिनरी कंपोनेंट किस चीज को कंट्रोल करता है रिस्पांस में? स्टूडेंट्स, सर एक ऑसिलेशन शो करता है, एक रेट ऑफ डिके शो कर रहा था. हाँ, एक जो है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है और दूसरा जो है रेट ऑफ डिके को कंट्रोल करता है. ठीक है. So let me plot this new response for you. So for this particular case, let's suppose this is the response. Okay, my drawing skills are not very great, so bear with me. ठीक है. Now this component is controlling the frequency. For example, अगर मेरे पास यहाँ पे दो रूट्स और हो जाएं, S3 and S4, ये एक और सिस्टम है. ठीक है. तो अगर आप देखें S1 और S2 का जो रियल पार्ट है वही रियल पार्ट S3 और S4 का भी है. तो मतलब डिके तो सेम होगी, डिके सेम होगी, लेकिन S3 और S4 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो S1 और S2 के इमेजिनरी पार्ट से ज्यादा है. ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि डिके तो वही, डिके की फॉर्म वही होगी. फॉर एग्जांपल डिके उसी रफ्तार से होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी अब बढ़ गई है. फ्रीक्वेंसी जो है समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट्स?
यस सर. सर ये फिर से समझा दो सर. ठीक है, पहले हम S1 और S2 के रिस्पांस को प्लॉट करते हैं. ठीक है, S1 और S2 के रिस्पांस, यानी हमारे पास जो सिस्टम है जो कि इन दो रूट्स से डिफाइंड है, S1 और S2. क्योंकि S1 और S2 जो है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है, किसी एक्सिस के ऊपर नहीं है, प्लेन के अंदर है. तो इसका मतलब है कि जब प्लेन के अंदर रूट्स होंगे या पोल्स होंगे तो उसके दोनों कंपोनेंट्स है, रियल कंपोनेंट भी है और इमेजिनरी कंपोनेंट भी है. अब रियल कंपोनेंट जो है वो रेट ऑफ डिके को कंट्रोल करता है और इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ द पोल जो है वो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है. तो चूंकि हमारे S1 और S2 रियल प्लेन के अंदर है, इसका मतलब है कि इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर डिके भी होगा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिके फंक्शन है और इस सिस्टम का रिस्पांस जो होगा वो ऑसिलेट करेगा और एक खास मैग्नीट्यूड से डिके होगा. समथिंग लाइक दिस. ठीक है, something like this. अच्छा, now this is system number 1. हमारा पहला सिस्टम है with two poles S1 and S2. एक दूसरा सिस्टम हम लेते हैं जिसके पोल्स जो है S3 and S4 है. ठीक है, S3 and S4 है. अब इस सिस्टम के जो पोल्स हैं उनकी रियल वैल्यू सेम है जो कि S1 और S2 की थी. यानी अगर आप S3 S4 को देखें तो इसकी रियल एक्सिस पे जो वैल्यू है वो सेम है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर -2 था और यहाँ पर -1 था. ठीक है, S1 और S2 की रियल वैल्यू -2 है, S3 और S4 की भी रियल वैल्यू -2 है, लेकिन S3 और S4 की रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू, लेट सपोज +2 और -2 है. अब अगर आप दोनों जो है दोनों सिस्टम की सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सिस्टम नंबर 2 की, यानी सिस्टम, चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिस्टम 1 has S1 and S2 poles and system 2 has S3 and S4 poles. ठीक है, अब सिस्टम 1 का रिस्पांस हमने प्लॉट किया. सिस्टम 2 का रिस्पांस कैसे होगा? उसके डिके सेम होगा क्योंकि उसके जो रियल कंपोनेंट है वो सेम है जो कि S1 और S2 के, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो ज्यादा होगी. पहला सिस्टम जो है 1 रेडियन पर सेकंड से ऑसिलेट कर रहा है जबकि दूसरा सिस्टम जो है 2 रेडियन पर सेकंड से ऑसिलेट कर रहा है. And so on. अभी ये क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर, क्लियर. Yes, sir. ठीक है. Now let's slightly change it. There is another system system 3 which has poles S5 and S6. S5 और S6 है, लेकिन S5 और S6 यहाँ पर है. ठीक है, तो अब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सिस्टम 1 के बराबर है, लेकिन उसकी जो डिके है वो फास्टर है. मिसाल के तौर पे ये -4 पे. ठीक है, अब कोई स्टूडेंट बता सकते हैं क्या होगा? रेट ऑफ डिके हाई होगा सर. रेट ऑफ डिके हाई होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगी. सो फॉर एग्जांपल रेट ऑफ डिके ये है मिसाल के तौर पर. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी उसकी सेम ही होगी. सेम फ्रीक्वेंसी है. समझ आ रही? अगर ये वाली जो
This is the old rate of decay. This rate of decay corresponds to -2. The new rate of decay corresponds to -4. Since both S1 and S2 has 1 radian per second frequency, and S5 and S6 also have 1 radian per second frequency, तो उनकी जो oscillation frequency same है, लेकिन rate of decay जो है वो ज्यादा हो गई है. अब समझ आ रही इस बात को, students? Yes, sir. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. Any ambiguity, any question? Students? अच्छा, चलें. Now I'm going to ask you a question. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? मैं कम्प्लेक्स प्लेन पे कुछ पोल्स प्लॉट करूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे बताएं कि इस सिस्टम का रिस्पांस कैसे है, ठीक है? कौन बताएंगे? स्टूडेंट? Sir, can you speak in English, please, more? Okay. So, can anyone tell me what would be the response of this system? decay भी है और frequency भी. Decay तो नहीं है. This is not a decay. This is ये increase होगा और जो oscillation है वो बड़े. Increase of this oscillation. is positive. Let's suppose this is +2 and this is +2 and -2. So now the exponential function, rather than having -2t, it will have +2t. That means with each value of time, the decay, it will not decay. Decay nahi hoga. It will actually grow because it is +2t. समझ आ रही है students? Yes, sir. Yes, sir. And the response would be something like this. And so on. At infinity, x of t, at t approaches to infinity, will be infinity. आपको नजर आ रहा है ना? The amplitude will gradually grow and the amplitude will be infinite at time t approaches to infinity. समझ आ रही इस बात की? Yes, sir. Sir, ये हमारे पास overtimed होगा. ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? Overtimed होगा, sir. ये ओवरटाइम नहीं है. This is unstable system. ठीक है, sir. हमने stability की, we discussed definition of stability in the very first few lectures. That if the system response approaches to infinity, when you provide some finite input to the system and its response reaches to infinity, at time t approaches to infinity, then such a system is called unstable system. समझ आ रही है students? Sir, इसको हम resonance phenomena कह सकते हैं. नहीं. This is not resonance phenomena. Resonance phenomena has to do with the natural frequency. When the applied phase frequency becomes equal or close to the natural frequency of the system, then the response of the system grows even exponentially. But we are not talking about, in our current discussion, we are not talking about some forced response. We are talking about कि आपके पास एक spring mass damper system है and you just give it some initial displacement. If you give it initial displacement and let it oscillate, but rather than the system amplitude decreasing with each oscillation, if the amplitude of the system oscillation increases with each successive oscillation, then such a system will be an unstable system. Okay, sir. ठीक है? Example, we have a simple pendulum. If you give it
some finite, initial displacement and let it oscillate, what will happen? If it is in the vacuum, its oscillation will not decay, but it will not grow either. It will remain, its oscillation amplitude will remain constant. It will neither decay nor it will grow. Such type of system is also a stable system, because the amplitude response doesn't go to infinity or to maximum possible value when the system time approaches to infinity. So it's a stable system. If this pendulum is oscillating in air medium, not vacuum, then with each successive oscillation, the amplitude of oscillation will decrease and eventually the oscillation will stop. So this system, under both conditions, is a stable system. On the other hand, if you have an inverted pendulum and you try to, ठीक है, inverted pendulum क्या है? For example, ये आपकी finger tip है और इस finger tip पे जो है एक stick को आप balance करेंगे. You're trying to balance a stick on your fingertip. Now this is an example of an unstable system. क्योंकि initially the stick is balanced by being exactly vertical at 0 degree deflection. If you give it even just a slight deflection, just give it 0.1 degree deflection, what will happen? That it will go to maximum possible output. Okay? In fact, the inverted pendulum system will be destroyed. Okay? Because it's an unstable system. Yes, this stick will, unless you try to balance it, जो कि active controller है, by its nature, without moving the finger to try to balance this inverted pendulum, this pendulum response, or the angular displacement of this pendulum will reach to its maximum value possible for the system within very short amount of time. Even though if you provide a very small magnitude of input, such a system is called unstable system. How do we mathematically define an unstable system? ये तो मैंने आपको एक example दिए, real life, ठीक है, एक rational example मैंने आपको. How to understand stability of the system, whether the system is stable or unstable. In mathematics, if you have a system equation and you want to figure out if the system is stable or not, you can know that by getting the roots of the system and plotting the roots on so just by looking at the roots real component, you can tell whether the system is stable or unstable. If the real component of the root is negative, it is stable. If the real component of the root is 0 but not positive, then the system is marginally stable. If the real component of the roots is positive, then the system is unstable. Questions, students? Sir, what if there is no imaginary part, sir? Then what will be the case, sir? If there is no imaginary part, Yes. okay. So let's take example of first order system. Okay. I would like you to remember your question. I think it will get answered in a short while. Just let me complete the second order system. If I forget to answer your question, you can ask me later. Okay? Okay, sir. Okay? So let's talk about a third scenario. Another scenario. Coming back to now this is very important. Coming back to our slide, and in this case, so what I do is now, okay, so okay, so now let's find roots again.
Now, all of you should be thinking that there might be value of C, C square, that is equal to 2mk. Or all of you can imagine a situation where C square minus 2mk becomes equal to 0. ठीक है? मतलब you select C value such that C square is equal to 2mk, or we can say that C square, so we can write it C square minus 2mk is equal to 0, or C square is equal to 2mk. So it's 4mk. G? It's 4mk. Student? G? It's 4mk or 2mk. Thank you. It's 4mk. You're right. So the C value which make the radical equal to 0 is called CC. So rather than writing C, we will write CC because it's a critical damping value. This is a critical damping value because it's the damping value which makes the oscillation become equal to 0. That stops the oscillation. समझ आ रही इस बात की? क्यों? Because if C value is equal to 4mk, then inside the radical, everything is equal to 0, and 0 radical is equal to 0, and then this whole portion that can result in imaginary component of the root becomes equal to 0. समझ आ रही इस बात की? Students? Yes, sir. ठीक है? Now CC की definition ही यही है कि हमें पता है कि if C value is 0, then there will be no damping and there will be oscillation without any decay. If we introduce some C value, then it will result in some damping. That means that initially there will be some oscillation and there will be decay. If we keep on increasing C value of the system, a time will reach when for a particular value of C, which is also called CC, critical damping, there will be no oscillation. ठीक है? Now CC square is equal to 4mk, or CC is equal to under root 4mk, which is equal to 2 under root mk. So this is the formula for CC. If you want to find out a damping value that will make the system critically damped, and you want to know what value of dampers should I use, then you should use C value equal to 2 under root mk. You should use this value. If you use this value, then this system will never oscillate, and it will come, if you give it any disturbance, it will come back to its equilibrium point without undershooting or overshooting the system. Equilibrium point or final value. समझ आ रही इस बात की? सर ये आखिरी स्टेटमेंट जरा रिपीट करो. ठीक है. देखिए इस सिस्टम को if I take C value, if I use C value equal to 2 under root mk. Now what is this C value should be called? This is now CC. That the damper value is equal to critical damping. Critical damping, what does the critical damping do? It is the value of damper which make the system, that will make the system response. Its response will be something like this. That if you give it some initial disturbance, it will go to some value and then it will come back to final value without oscillating around the final value. मतलब it will not do this thing. ये नहीं करेगा. ठीक है? It reaches the final value without crossing the final value. That means that there is no oscillation. Only there is decay. Why?
The reason for that is because when this term becomes equal to 0, so आपके पास what you will get S1 2 equal to minus C over 2m. So that means you will have two roots. S1 is equal to minus C over 2m and S2 is equal to minus C over 2m. ठीक है? That means that you will have two identical roots. समझा रही? दोनों roots identical है, दोनों roots की same value है. ठीक है? That means if I plot it on the real and imaginary axis, I'll get root number 1, S1, and at the same place, root number 2, S2. And both of them are on the real axis. Both of them are on the real axis. Now, if you look, there is a decay. So, okay, I should have plotted as exponential decay. If you see, there is an exponential decay function. Okay? There is exponential decay function, but there is no oscillation in this system because there is no imaginary component of the poles, or there is no imaginary component of the roots. Clear है ये बात यहाँ तक, students? Yes, sir. ठीक है? So, okay, now let's move one step forward. ठीक है? अब तक हमने we have discussed three cases: undamped system, underdamped system, and now the third case is critically damped system. Now let's talk about overdamped system. So we increase C value to greater than CC value. That means if I increase C value such that this component, that this C square value is greater than 4mk. For example, if my system is, let's say, if I use 4 here. If I use 4 here, then my S1 comma 2 will be minus 4 by 2 plus minus 16 4 into 3. ठीक है. 16 minus 12 divided by 2 into 1. So that comes out to be minus 2 plus minus, so 4 plus minus 1, ठीक है? Plus minus 1 आएगा, ठीक है? But there is no iota because positive value plus 16 is greater than minus 12, and radicals say when you solve the radical we get with a positive value, without any iota. So our S1, our first root will be equal to minus 2 plus 1, which is equal to minus 1, and second root will be equal to minus 2 minus 1 equal to minus 3. If I plot it on the complex plane, okay, then my first pole S1 is at minus 1, and my second pole is at, which is S2, is at minus 3. Students? Yes, sir. Any questions? Any questions so far? No, sir. ठीक है? Now if we look at this system, now the system, question number 1, will the system response have any oscillation? No, sir. No. Why? The imaginary part 0 है. Imaginary part 0. Question number 2, will this system be a stable system or an unstable system? Stable one. Highly stable. Why? क्यों stable क्यों होगा? क्योंकि decay कर रहा है, grow नहीं कर रहा, sir.
Very good. क्योंकि both of the अच्छा, this is perfectly good explanation, but there is even better way to express what you are saying. You can say, and that's how we control engineer discuss the stability. We say that all the poles of the system are in the left hand plane. ठीक है? This is the left hand plane. ठीक है? ये वाला जो है, this is right hand plane. ठीक है? And this one is, ठीक है? So left hand plane में क्या होता है? The imaginary axis is the negative imaginary axis. So if your poles are in the left hand plane, means whether they are here, 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 here. If the poles are anywhere in the left hand plane, the system is stable. If any one pole is in the right hand plane, either here or here or here or here or here or here or here, it will have growth instead of decay. If it has growth, then the system is unstable. Tabi, okay, let me ask you a question. If I give you a complex plane plot of the poles of the system, can you tell by looking at the plot of the poles whether the system is stable or unstable? Student? Yes, sir. कैसे बताएंगे? How would you tell me if the system is stable or unstable? For example, मैं आपके लिए जी बताऊं. अगर पॉजिटिव साइड पे होगा तो अनस्टेबल होगा और जब नेगेटिव साइड पे होगा तो स्टेबल. बिल्कुल सही. In other words, अगर एक साइड पे हो दूसरे साइड पे. अच्छा, उसका जवाब बड़ा सिंपल है. ठीक है, आप खुद उसका जवाब देंगे मुझे. ठीक है. Think about this. If you have two poles, जैसे for example ये हमारे पास रियल है और ये इमेजिनरी. एक पोल जो है यहाँ पर है और एक पोल जो है यहाँ पर है. ठीक है. So this is, let's suppose, +2 and this is -2. अब इसका रिस्पॉन्स जो होगा वो कुछ यूं होगा. x of t is equal to e raised to the power -2 of t plus e raised to the power +2 of t. Now think about when t approaches to infinity. What will happen? E raised to the power -infinity plus e raised to the power plus infinity. This will become 0 plus infinity will be equal to infinity. Does that answer your question? आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया तनवीर? Yes, sir. Mathematically समझ गए. मैथमेटिकली समझ गए ना? और इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सिस्टम के मिसाल के तौर पे 10 पोल्स हैं, if you 10th order system, that means you have 10 poles. 9 poles are in the left hand plane. 9 poles are stable poles, but 1 pole is in the right hand plane. Because of this one, बाकी 9 poles तो 0 हो जाएंगे ना. 0 plus 0 plus 0 plus 0. लेकिन जो आखिरी एक पोल जो है जो कि राइट हैंड प्लेन में, that will make the whole x of t approaches to infinity and the system will become unstable. That means for a system to be classified as a stable system, all the poles of the system needs to be on the left hand, in the left hand plane of the complex plane, left hand side of the complex plane. ठीक है. अब आपने चारों सिस्टम पढ़ लिए ना. अनडैम्प्ड सिस्टम, अंडरडैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम एंड ओवरडैम्प्ड सिस्टम. अब मैंने प्लॉट पे आपसे पूछना है. ओवर डैम्प्ड सिस्टम का एक्सप्लेनेशन आपने सर सही मतलब स्टिल डिडंट अंडरस्टैंड इट सर. जैसे सर मैंने आपको क्वेश्चन पहले बताया कि सपोज सर वी हैव इंस्टेड ऑफ मतलब जो सी स्क्वायर जो है सर वो ग्रेटर हो. So what would we have? What would be the behavior that we have? The system behavior will be like this. It will not oscillate, but it will take longer to reach its final value. And why would be that, sir? Why would be that? Imagine, ठीक है? Imagine a pendulum in vacuum, undamped system. In vacuum, what will happen? The pendulum oscillation will not decay. Clear? यहाँ तक clear है?
स्टूडेंट अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या नाम है आपका? वो लीव कर गया सर, पता नहीं इंटरनेट। अच्छा उन्हें आने दें। क्या क्या नाम था? मैंने नहीं देखा। स्टूडेंट का नाम क्या था? सऊद। सऊद। Sorry, I'll just explain. कोई और some other student can answer my questions. Okay. So let's suppose this is so initially. If we let the pendulum oscillate in vacuum, if we let a simple pendulum oscillate in vacuum, what will happen? That this pendulum will keep on oscillation without any loss of energy. So the amplitude of oscillation will remain constant. ठीक है, समझ आ रही इस बात की कि pendulum जो है, it will keep on oscillating until the end of time. Its oscillation amplitude will not decrease because it is oscillating in vacuum and there is no air friction to reduce the oscillation amplitude of the pendulum. ठीक है? सऊद आ गए या नहीं आया अभी तक? नहीं है। अच्छा, ठीक है. Now if we, so this is an example of undamped system. If we bring this pendulum system, or if we fill the space around this pendulum system with air, that means that we have introduced some value of C, and if we let the pendulum oscillate, if we disturb the pendulum and let it go, and we see that in this air medium it crosses its equilibrium point and then oscillate across the equilibrium point, but with each successive oscillation its amplitude is decreasing. That means that this is an underdamped system. Students, yahan tak clear hai? Yes, sir. Clear. Yes sir. Okay. Next, what if I increase the air density, or what if I put this pendulum, I fill the space around this pendulum with oil, or maybe even water. Let's say I use water. Now, if I use water, imagine if I let this pendulum, ठीक है, and let's make it oil. Let's make it oil. And if I let this pendulum from a certain from some initial disturbance, if I let it go, it will move towards its equilibrium point, and imagine that by the time it reaches equilibrium point, its motion has slowed down so much that by the time it reaches its equilibrium point, it is unable to move any further. So it reaches the final value without any oscillation. ठीक है? We will consider this condition to be critically damped system because there is no oscillation and the system approaches its final value without any oscillation. Now let's assume that we increase the damper value further. Rather than using oil, we use honey as the medium in which the pendulum is oscillating. Now, because of higher viscosity of the honey, which results in higher damping value, even greater than critical damping, now the system, if I disturb the pendulum and let it go, the pendulum would move so slowly that it will reach its final value by taking a lot more time than it needed to reach its final value when the medium was water. Because the damping value is so high that the system barely reaches its final value without oscillation, but it takes more time to reach its final value compared to the critically damped condition value. That's why we call it overdamped system. Students? Yes sir. ठीक है? It's clear now. Yes. In other words, if the C value is greater than CC,
C value is greater than CC. Every system has only one CC value, critical damping value. And that CC value depends on a certain formula. C is equal to 2 under root mk. If C value is greater than 2 under root mk, if C value, let's do it like this. If C value is less than 2 under root mk, then the system will oscillate. If C value is equal to is equal to 2 under root mk, then the system will not oscillate. It will reach final value without oscillation. If C value is greater than 2 under root mk, then the system will reach final value without oscillation, but it will take more time than it took when C value was equal to 2 under root mk. Does that clear it? Yes, sir. Okay. So these are the 4 different conditions, and I'm going to plot the poles of the system on a complex plane, and then I'm going to ask you, what kind of system do you suspect this is? Is it underdamped system, overdamped system, or critically damped system? So my first case is, so I have S1 and S2. Let me ask a question from a particular student. Okay? So Muhammad Arif Khan. Muhammad Arif? Yes, sir. Can you tell me, is this system underdamped system, undamped system, critically damped system, or overdamped system? ये जो complex plane मैंने plot किया है, roots plot किए complex plane पे या poles plot पे, based on that, we think it's which type of second order system? Sir, kindly that question repeat for us. Okay. So, question number 1. Is it a first order system or second order system? It's a second order system. Why? Sir, because sir, we have only sir the real root, sir. नहीं, real के साथ first और second का ताल्लुक नहीं है. Yes, sir. Because there are 2 poles, 2 poles. अगर 2 पोल होंगे तो it would be a second order system. अगर एक पोल है तो it would be a first order system. Yes, sir. Okay. Next, my question is this system an underdamped system, undamped system, critically damped system, or overdamped system? नहीं पता? No, sir. अच्छा सुने मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछता हूँ. मोहम्मद उसामा अजीज. मोहम्मद उसामा अजीज. मोहम्मद उसामा अजीज. चले गए. ठीक है. अच्छा फिर अटेंडेंस लेनी चाहिए अभी. मुनीब खान. मुनीब नहीं है. साकिब रसूल. आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट कम हो रहे हैं. क्वेश्चन की बारी आई. सारा हकीम. सारा हकीम नहीं है. Sayyid Mir Hamza. Yes, sir. Okay. Looking at this figure, can you tell me if the system is first order system, second order system, or whether the system is undamped system, underdamped system, critically damped system, or overdamped system? कुछ explain करें मुझे. सर ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है. और सर ये सर मुझे लगता है क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है. नहीं,
When the imaginary part is 0, आपके पास दो choices आ जाते हैं. Either it is critically damped system, or it is over-damped system. अब आपकी यहाँ तक your answer is correct that since it has no imaginary component, then it is not under-damped or undamped system. You have two choices left. Either it is critically damped system or it is over-damped system. Which one is it? Sir, I don't know. Okay, let me explain. For critically damped system, let's suppose S1 comma S2, this C square minus C plus minus C square minus 4AC 4mk divided by 2m. Now this component become equal to 0. If this component become equal to 0, then S1 comma S2 becomes minus C over 2m, or S1 is equal to minus C over 2m and S2 is equal to minus C over 2m. That means that both the poles have exactly the same value. Figure में देख के मुझे बताएं, does both the poles have exactly the same value? No, sir. No. नहीं है. So critical damped system में both the poles are identical. उसके लिए proper word that we use, we say that both the poles are real and identical. In this particular case में both the poles are real but not identical. Identical तो नहीं है ना, same value तो नहीं है. Yes, sir. एक की वैल्यू मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे -1 है और दूसरी की वैल्यू जो है -2 है. Now we have two poles, both the poles are real. If they are real, that means they do not have any oscillation. ठीक है? But the two poles are not identical. ठीक है? That means that the system is over-damped system. समझ आ रही students? Yes, sir. ठीक है? Yeah, but what if I have two poles at -1, S1 and S2. Both the poles are at -1. अब आप क्या कहेंगे? Critical. It is critically damped system. Why? Same way. Yes, both the poles are real क्योंकि इसके कोई imaginary component नहीं है, and both the poles are identical. समझा रही इस बात? Now this is a critically damped system. अच्छा, चलिए मैं एक और ड्रा करता हूँ. Student, tell me. चलो, let me ask some other student. Okay, जागते रहे. Okay, Sultan Zeib. नहीं है. अच्छा, सैयद अली मुराद. अच्छा, चलिए मुराद पूछिए. Tell me, based on this complex plane depiction of the poles, what do you think? Is this system under-damped system, over-damped system, critically damped system, or undamped system? Sir, it is under-damped system. Very good. It is an under-damped system. Can you explain to me why it's an under-damped system? सर क्योंकि इमेजिनरी पार्ट भी है और रियल पार्ट भी है इसके पास. Yes, very good. ठीक है? That means that each pole has imaginary part as well as real part. अच्छा, एक चीज आपने नोट की है कि whenever complex plane में whenever there is a pole, तो दूसरा pole exactly उसके नीचे होता है. Have you noted this, students? Yes, sir. Yes. Why is that? सर इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे सर चेंज नहीं हो सकता. ये मैथमेटिकल जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है
सर इसमें imaginary part use. Plus minus है, because it has plus minus. Its magnitude is same, but its it is either positive or it's negative. The answer, the proper answer, your answer is very correct. Gigi, question? एम्पलीट्यूड सर नेगेटिव में भी और पॉजिटिव डायरेक्शन हाँ पॉजिटिव, लेकिन उनका जो क्वांटिटेटिव नंबर वाइज वो सेम है, लेकिन उसका साइन डिफरेंट होता है ना, प्लस समथिंग आयोटा और माइनस समथिंग आयोटा होता है, ठीक है. दैट मीन्स दैट इन कम्प्लेक्स, ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन और इन कम्प्लेक्स नंबर्स हैविंग इमेजिनरी पार्ट always exist as complex conjugates. ये तो आप सबको पता है ना students? समझ लीजिए On the complex plane, on the real axis, you can have a single pole. You can have 2 poles. You can have 3 poles. But if you go on the imaginary axis, if there is any pole here, there need to be complex conjugate for that pole. यस सर What is the reason for that? Because if you look at the formula, at this formula, your poles or your roots for the quadratic equation will always have minus C over 2m plus minus under root C square minus 4mk over 2m. ठीक है? So if there is some value of iota, it will have a positive value and a negative value. Magnitude same होगा, उसका जो sign होगा वो positive होगा और negative होगा. So there will always be, in short, a single pole cannot exist without its conjugate in the complex plane. Complex plane पे देखिए हम कहते हैं this pole is in the real axis, this pole is in the real axis, this pole is in the imaginary axis, this pole is in the imaginary axis, this pole is in the imaginary axis, this pole is in the real axis, this pole is in the real axis, but this pole is in the complex plane. ये plane के अंदर है, किसी एक axis के ऊपर नहीं है. That means that this pole has both the real axis value and the imaginary axis value. Now whenever based on the mathematics, an imaginary number doesn't exist without its conjugate. For any physical system, if it has an imaginary number, it will always be in the form of complex conjugate. ठीक है? If you have one pole here, there must be a conjugate pole for that. If you have one pole here, there must be a conjugate pole here. If you have one pole here, there must be a conjugate pole here. ठीक है? अगर आपके पास, if you do some calculation and you end up with a pole having imaginary value but not having a conjugate. For example, आपने कोई एक problem solve किया and you end up with a single pole in the complex plane, with a single pole in the complex plane, and there is no conjugate there. There is no conjugate here. Then that means you have made some mistake while doing some calculations. ठीक है? You can end up with a single pole. You can have a single pole on the real axis. You can have 2 poles on the real axis. You can have 3 poles on the real axis. You can have infinite poles on the real axis. But on the complex plane, if you have one pole, it will always have a conjugate pole. If you have another pole, it will also have a conjugate pole. If you have another pole here, it will also have a conjugate pole. That means that their real value will be the same, but their imaginary value will be plus minus. So if it is plus 1, this will be minus 1. For this one, if it is plus 2,
This one it will be minus 2. For this one, if it is plus 4, then for this one it will be minus 4. समझ आ रही इस बात की? कौन सा ज्यादा ऑर्डर ज्यादा हो रहा है सर? हाँ, ऑर्डर ज्यादा होगा. मैं डिफरेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ. ठीक है? अच्छा, चलिए. Let me ask you another question. Let me ask you another question. Okay, let me ask some student. Sayyid Arif Hussain. Sayyid Arif Hussain. Yes, sir. Arif, can you tell me what is the order of this system? Third order, sir. Third order system, because it has 3 poles. Yes, sir. Achha, next, can you tell me what would be the response of this system? Will it have oscillation or not? No, sir. Oscillation नहीं होगी. Hogi. Because Sir, ये left side है ना, sir. these two poles have imaginary values. Arif? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is it clear? Why am I saying that the system will have oscillation? System response will have oscillation? Because imaginary. Because not all the poles have an imaginary component, but out of the 3 poles, 2 have imaginary component, and these 2 poles will result in oscillation. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Acha. Now, I'm going to change it a little bit. Okay, let me ask someone else. Chale, let's ask Awais. Awais? Okay, can you tell me about this system now? What is the order of this system? Awais Ghani, yes. Fourth order. It's a 4th order system because you're seeing 4 poles on the complex plane. Question number 2. Is this system a stable system or an unstable system? एक फुल अनस्टेबल रीजन है, एक्सिस पे तो सर अनस्टेबल. तो पूरा का अगर ये 4 में से एक पोल भी राइट हैंड साइड पे आ जाए जो कि अनस्टेबल रीजन है कॉम्प्लेक्स प्लेन का, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है अनस्टेबल हो गया. सो दैट सिस्टम इज एन अनस्टेबल सिस्टम. कैन यू हेल्प मी ड्रॉ दिस रिस्पांस ऑफ दिस अनस्टेबल सिस्टम? और कैन यू टेल मी, विल दिस रिस्पांस ग्रो और डीके? इसका रिस्पांस ग्रो करेगा या डीके करेगा? अनस्टेबल है तो ग्रो करेगा. ग्रो करेगा बिकॉज इट्स एन अनस्टेबल. अच्छा, अब ये जो ग्रो करेगा, ये ऑसिलेशन के साथ ग्रो करेगा या विदाउट ऑसिलेशन ग्रो करेगा? यस सर, ऑसिलेशन के साथ ग्रो करेगा. इमेजिनरी पार्ट ऑसिलेशन के साथ क्यों ग्रो कर रहा है? बिकॉज ऑफ द इमेजिनरी पार्ट. Because 2 of the poles have imaginary part. So this system response will be something like this. ठीक है? Is it clear now, students? Yes, sir. ठीक है? Now let's see, observe slide पे हम जाएंगे. ठीक है? Sir, I have a question here. जी जी. Yes, Sir, ask me a question. Sir, what will be that part which shows the decaying component? What will be that part role in the system response? It is this, okay. That in the left plane on the real part. Yes. Yes. Okay. For that, we'll have to go a little bit deep inside the
mathematics of this response. So let's suppose this is -1 value. Sorry, this is -2. This is -1. And let's suppose this is +1. Okay? So we'll have like a 3 decay function x of t. I'm not going to consider, let's make it simple. Okay? Let's make it simple. Let's make it a third order system containing 2 decay functions and 1 growth function. So x of t will be equal to e raised to the power -2t plus e raised to the power -1t plus e raised to the power +1t. Okay? Now we will put different values of t. So at 0, it will be 1 plus 1 plus 1 is equal to t की value 0 हो जाएगी ना. So नहीं. So this will be, sorry, it will be e raised to the power -t, नहीं, t के 0 plus e raised to the power -1 of 0 plus e raised to the power, ठीक है, +1 of 0. ठीक है. Now this will be e raised to the power 0 is equal to 1 plus e raised to the power 0 equal to 1 plus e raised to the power 0 equal to 1. हमारे पास response की value क्या आएगी? 3 आएगी. So the response will start from 3. At time t is equal to 0, response will start from 3. Now when t approaches to 1, at x is equal to x of t equal to 1, this will become e raised to the power -2, ठीक है, plus e raised to the power -1 plus e raised to the power +1. इसको जरा सॉल्व करके बता दें क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट. एनीवन? किसी के पास कैलकुलेटर है? कोई कर रहा है या नहीं कर रहा? अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड. स्टूडेंट्स कर रहे हैं. चलें, let's move forward. Okay, what will get, you will get some value of some constant value. Maybe it's 2, maybe it's 1, maybe it's 0, maybe it's -2, some value. ठीक है? Sir, 0.135. क्या रहे? 0.135. 0.135 value. ठीक है? And you keep on doing x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, x is equal to 5. ठीक है? What you realize, ठीक है? क्योंकि देखिए इस इक्वेशन को I can write it like this: x of t is equal to 1 over e raised to the power 2t plus 1 over e raised to the power t plus e raised to the power t. Now you can imagine as t value increases, as t value approaches towards infinity, what happens to these two values? They approach to 0. क्योंकि 1 over e raised to the power infinity को जा रहा है ना. So these value become smaller and smaller and smaller. यानी जो decay का effect है वो कम और कम और कम होता जा रहा है. जबकि जो growth का effect है वो t के increase के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. It is moving towards infinity. So initially जो आपके decay poles हैं, initially जो decay poles हैं, वो system में decay ला रहे हैं. लेकिन after some time जो आपके पास जो उसका pole है, क्या कहते हैं, growth का pole है, that becomes the dominant pole. क्योंकि decay poles after some time, after certain value of t, the decay pole value approaches to infinity. जबकि जो growth pole है, those values approaches to the decay poles approaches to 0 and the growth poles approaches to infinity as t approaches to infinity. So as the time progresses, the system response is totally controlled by the unstable pole, and the effect of the stable poles gets
neglected or gets or approaches to zero. समझ आ रही इस बात की? Yes, sir. Yes, sir. जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था क्या नाम था उनका? Haris. हारिस. Yes, sir. समझ आ गई, sir. ठीक है? So that's why I'm saying that even if you have 1 million poles, and out of those 1 million poles, 999,999 poles are stable poles, but only one pole is unstable, just to infinity. And since the total response is sum of the response of each poles, then 0 plus a million zeros plus 1 infinity becomes equal to infinity. And the system response, if it approaches to infinity for a bonded input, if the system response is unbounded, that means for a limited input, if the system response approaches to infinity, at time t approaches to infinity, then the system is called an unstable system. अच्छा, थोड़ी सी मैंने गलती की है. गलती ये है कि अगर चूंकि मैंने यहाँ पर 3 पोल्स को चेंज कर दिया, अब सिस्टम के रिस्पांस में कोई ऑसिलेशन नहीं होगी. For this system, there will be no oscillation. क्यों ऑसिलेशन नहीं होगी? Because all the three poles are on the real axis. So your response may initially go towards 0 point, but eventually it will go towards infinity. समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है? अच्छा, यहाँ तक सब क्लियर है? सर जब ऑसिलेशन होगा तब इनफिनिटी तक चल जाएगा. नहीं, विदाउट ऑसिलेशन भी इंफिनिटी को जा सकता है. जैसे इन्वर्टेड पेंडुलम है, आप इमेजिन करें, मैं आपके सामने खड़ा नहीं हूं, अदरवाइज आई वुड हैव डन द डेमोन्स्ट्रेशन फॉर यू. इमेजिन you have a stick, or you are trying to balance a stick on your fingertip. ठीक है? If you disturb it and not balance it, ठीक है, इसको बैलेंस करने की कोशिश ना करें, you just disturb it slightly. What will happen to the response of the system? Its response will approach to infinity, the maximum possible response, without oscillating across the 0 point. वापस तो नहीं आएगा ना कि वहां पे oscillate करके में infinity तक जाएगा. It will reach the infinity without oscillation. समझ आ रही है इस बात की? Yes, sir. ठीक है? So sometime the system, it is not necessary. ठीक है? You are thinking about resonance condition. And of course, in resonance condition, there will always be oscillation, because resonance is an oscillation phenomenon. But for an unstable system, the criteria is that the system response approaches to infinity. Now that response can approach to infinity with oscillation. Gradually, with each oscillation, its response will increase. Eventually, it will reach to infinity. Or without oscillation, it will reach to infinity as time t approaches to infinity. So it can be something like this, or it can be something like this, depending on the roots. If the roots have no imaginary component, the response will be this. If the roots have imaginary components, for example, our previous example, now the roots have imaginary components, now the response will be like this. In both the cases, the system is still an unstable system, and its response approaches to infinity as time t approaches to infinity. Issue, question, confusion? Students? आगे जाएं? Should we proceed further? Yes, sir. Yes, sir. विदाउट कितना और क्रिएट हो सकता है. अच्छा, दो स्टूडेंट पहले तनवीर आप थोड़ा खैर सब्र करें. आप स्टूडेंट जरा दोबारा रिपीट करें अपना क्वेश्चन प्लीज. विदाउट ऑसिलेशन सर रेजोनेंस क्रिएट हो सकता है. नहीं, विदाउट रेजोनेंस जो है वो ऑसिलेशन फिनोमेना है. लेकिन रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है? इफ द फोर्सिंग फंक्शन फ्रीक्वेंसी becomes equal or close to the natural frequency of the system, ठीक है, then the resonance is created. जबकि जो मैं आपको कह रहा हूँ,
इंस्टेबिलिटी के लिए, उसके लिए फोर्सिंग फंक्शन की जरूरत ही नहीं है. आप सिर्फ उस सिस्टम को थोड़ा डिस्टर्ब कर दें, इनिशियल कंडीशन दे दें, ठीक है, it will still approach to infinity even though you are not providing it external forcing function except for the initial conditions. ठीक है, अगर आप तस्वर करना चाहते हैं, if you want to think about it, think about this spring mass damper system. Now spring mass damper system is inherently a stable system. It is not an unstable system. But assume for a short time, assume that this spring mass damper system is unstable system. होता नहीं है. In reality, spring mass damper system, अगर if you check its poles values will always be to the left hand side of the complex plane. That means that its poles value will always have either 0 or negative real value. That means that the spring mass damper system is a stable system. ठीक है? Now imagine that in some other universe, the spring mass damper system is an unstable system. If it's an unstable system. So if I try to give it some initial condition, x t equal to 0 is equal to, let's suppose, 1 unit. I give it some initial condition and let it go. I let it go. So rather than going towards the equilibrium point, which is x is equal to 0, it keeps going downward. The mass keeps going downward until it breaks the damper, it breaks the spring, and it breaks the whole system, because there is no stopping to x of t. With each increase of time, with progression of time, x of t approaches to infinity as t approaches to infinity. That is kind of an example of a non-oscillatory unstable system. ठीक है? Oscillatory unstable system कैसे होगा? If I give it some initial displacement and then let it go. Now I'm not applying any force after that. Then let it go. If I let it go, it first goes towards this equilibrium point, then comes back with increased oscillation, then goes towards the equilibrium point, then comes back, then goes up, then comes back, and eventually its oscillation amplitude approaches to infinity. Clear, student? Clear, sir. Sir, for example, 1 plus minus 2 iota. That will be a underdamped system, because this will be an underdamped unstable system. क्योंकि आपने कहा +1 ना, so +1 means that it is a growth exponential function, and plus minus oscillatory unstable function. Oscillatory unstable system response, obviously. ठीक है? Okay. Okay, now लेक्चर कितना रहता है? Lecture बस 10-15 मिनट में मैं खुलासा. I'll go over the slides. If anything is left, we'll discuss that. Otherwise, I think we have cleared almost 70-80% of the lecture. कुछ रह गए तो वो next कल की क्लास में, Saturday की क्लास में हम कर देंगे. ठीक है? So slide number 2, we discuss impulse function. We have already discussed it in the previous lecture. Then we discussed impulse response. That impulse response is a special type of response. ठीक है, वो हमने previous lecture में discuss किया था. Then we discuss the poles and the zeros. वो हमने एक lecture में, previous lecture में discuss किया. We have done this slide. Let's go towards this slide. This slide. Now this is an interesting slide. ठीक है? Now these are different responses. Let's call this response number 1, response number 2, response number 3, response number 4, response number 5. So we have 5 different, and response number, let's call it 6. 6 different responses. And then we are given different poles. This is a pole, this is another pole, this is another pole, this is another pole, this is another pole, and this is
another pole. Okay? Now, all of these responses represent different types of second order system. You have to, now as a student, you have to tell me which response correspond to which set of poles. Okay? So let's talk about response number 6. Response number 6. student. What type of response? इसको देख के आपको क्या it is very good. It is an undamped response. Why? Because it has oscillation but no decay. Very good. It has oscillation but no decay. So that means that the roots of this system will have imaginary part, but since there is no decay, then the roots will have no real part. So where would the true roots of this system exist in the complex plane? on vertical line. Very good. On the imaginary axis. Okay? This is the imaginary. So these two poles are for this response number 6. ठीक है? हो गया? ये दो पोल हमने आइडेंटिफाई कर. अच्छा, now look at response number 5. ठीक है? Response number 5. Now it might be a first order system or a second order system, but look at the response number 5. My first question for you would be, is it a stable system or an unstable system? Unstable. Unstable. How did you know that? आपको कैसे पता चला? Growing function. It's a growing function, sir. Yes, because the response of the system is growing towards infinity as time t approaches to infinity. ठीक है? Now, my question to you is, where would the pole, if it's from this example, it's not clear whether it's a first order system or a second order system, so I will make it clear for you. It's a first order system. If it's a first order system, then it will have only one pole. Now you have to tell me, out of all the poles that I have noted on the complex plane, which pole represent this system? System number 5. On horizontal axis. On the horizontal axis, and which direction? Is it In the right plane. right hand plane पे, real axis पे, so this pole represent this plane, this system response. ठीक है? It's a first order unstable system. Okay. What about number 4? Number 3 and 4. Number 3 and 4. Now this is very important. Both of them are first order system. That means that only one pole will define this system. Question number 1. Is system 3 a stable system or an unstable system? Stable. A system. Is it stable or unstable? Stable, sir. Stable. Okay. So tell me, this pole, does this correspond to system 3 or system 4? So ये system इसका 3 decay ज़्यादा है सर. इसका decay fast. Very good. ठीक है? देखिए, it's a very important concept you need to understand. See, let's suppose I have x1 of t equal to, let's suppose this is -4 and this is -1. ठीक है? So this x1 जो है वो system 4 को represent कर रहा है, या चलिए system 3 को represent कर रहा है. So e raised to the power -4t है. और दूसरा जो है x2 जो है, चलिए इसको चलें, let's call it x3, let's call it x4. E raised to the power -1t. If I plot these two responses, the first response, x3 response, will decay very quickly. Why? Because the power of the exponential function is larger compared to the power of the x4 of t exponential function.
and the x4 of t will take more time to decay to reach 0. ठीक है? So this will be x4 of t and this will be x3 of t. This is x of t and this is time. यहाँ तक clear है student? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? So now I'm gonna if there is any ambiguity you can ask me, otherwise मैं ये erase कर रहा हूँ. सर ये 5 नंबर के जो सर ये 5th सन के पोल्स सर इसमें एक ही पोल है. इसमें एक ही पोल है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है. सर आपने तो यहाँ पे दो आइडेंटिफाई किए हैं. सिस्टम 3, सिस्टम 4 और सिस्टम 5 जो है, ये तीनों सिस्टम जो है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है. ठीक है सर. ठीक है, मुझे पता है दिस इज नॉट ऑब्वियस, लेकिन मुझे इसलिए पता है क्योंकि अगर हम इसमें से कोई दो कंसिडर करते हैं, दो पोल्स, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास बाकी सिस्टम के लिए पोल्स नहीं बचते, क्योंकि डायग्राम में तो हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ पोल्स हैं और फिर 6 सिस्टम्स है ना. तो अगर हम इसके लिए 2 पोल्स सेलेक्ट करते हैं तो फिर हमारे लिए बाकी सिस्टम के लिए पोल्स नहीं बचते. सो दैट्स हाउ आई नो दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. वैसे डायग्राम से देख के आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते. उसकी रीजन ये है कि ये सेकंड ऑर्डर ओवर डैम्ड सिस्टम, ये क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम भी हो सकते हैं. ठीक है, ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस सिस्टम, what are the poles? ये 2 poles हैं. चलो मैं खुद कर लेता हूँ आपके लिए, but I'll ask you questions. This is system 2. These 2 poles, this one, and this one. These 2 poles represent system 2. Why? Students? Sir, imaginary और real part दोनों है. जी, और decay भी है. Sir, there are conjugate roots of imaginary. बिल्कुल, इसमें डिके भी है और ऑसिलेशन भी है. डिके जो है नेगेटिव रियल कंपोनेंट की वजह से और ऑसिलेशन जो है वो इमेजिनरी कंपोनेंट. ठीक है. अच्छा, अब आप एक्सपर्ट हो गए. नाउ यू कैन टेल मी कि ये 2 पोल्स जो है, दिस पोल एंड दिस पोल, why does these 2 poles represent system 1 response? बस अनस्टेबल है सर ये. क्योंकि ये जो रियल कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है, रियल लेफ्ट राइट हैंड साइड रियल एक्सिस पे, और इसका जो इमेजिनरी कंपोनेंट है वो नॉन जीरो है. So there is oscillation because of imaginary component and there is growth because of the real component on positive side. क्लियर है यहाँ तक? यस सर. अच्छा, अब जरा कुछ रिस्पांस, ये जो आपको रिस्पांस नजर आ रहा है, अब मुझे ये बताएं कि ये रिस्पांस कौन से टाइप का रिस्पांस है? ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट है, बिल्कुल सही है. वेरी गुड. लेट मी आस्क यू स्पेसिफिक क्वेश्चन. इज इट अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम रिस्पांस और अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम रिस्पांस? फर्स्ट ऑर्डर. नहीं. कैसे आप बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कोई सिस्टम बता दे कि क्या डिफरेंस हो? सर सेकंड ऑर्डर सर, क्योंकि ऑसिलेशन हो रही है. क्योंकि ऑसिलेशन है. फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में ऑसिलेशन क्यों नहीं हो सकती? सर उसकी डैम्पिंग की वैल्यू 0 होती है. वो नहीं, डैम्पिंग की वैल्यू की बात नहीं. इमेजिनरी सिस्टम का, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का अगर आप रूट लेंगे, देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ये हो सकता है ना, कि मैं आपके लिए एक लिख लेता हूँ. G of S is equal to 1 over S plus 1. If I take S plus 1 equal to 0, then S is equal to minus 1. मुझे ये बताएं कि यहाँ पर 1 की जगह मैं कुछ भी लिख दूं, क्या यहाँ पर आयोटा आ सकता है? नो सर, नहीं आ सकता ना. ठीक है, आप बेशक लेक्चर के बाद बैठ के
आप इसी तरह का s प्लस a, ये फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है, स्टैंडर्ड सिंपल फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है। इस ट्रांसफर फंक्शन में आप a के साथ s के साथ कुछ भी लिख दें, ठीक है, यानी 2s प्लस 3 लिख दें, 10s प्लस 9 लिख दें, 1 मिलियन s प्लस 2 बिलियन लिख दें, जो भी लिख दें, और try to come up with an iota value for the roots. You will be unable to get an iota in the root. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में चाहे जो भी हो, उसमें कभी भी ऑसिलेशन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो सकती है, वो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑसिलेट कर सकता है, लेकिन नेचुरल रिस्पांस में ऑसिलेट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, कोई एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और उसको आप इनपुट जो है ऑसिलेटरी इनपुट दे दें, ऑसिलेटरी इनपुट दे दें, ठीक है, उसे स्टेप इनपुट ना दें, उसे साइनोसाइडल इनपुट दे दें, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस भी जो होगा वो भी साइनोसाइडल होगा, ऑसिलेटरी रिस्पांस होगा। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ऑसिलेशन नहीं हो सकती, वो हम नेचुरल रिस्पांस की बात कर रहे हैं, फोर्स रिस्पांस की बात नहीं कर रहे। नेचुरल रिस्पांस वो होता है कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उसे एक इनिशियल डिस्टर्बेंस, सिस्टम को एक इनिशियल डिस्टर्बेंस दे देते हैं। अगर सिस्टम को आप इनिशियल डिस्टर्बेंस देते हैं और उसमें कोई ऑसिलेशन आती है, then that is not because of external force, it is because the nature of the system is resulting in oscillation of the system, and the nature of the system is totally dependent on the poles of the system. And if the poles of the system have imaginary part, then it will have oscillation in its natural response. If the poles of the system cannot have imaginary part in its roots, then the natural response of the system cannot have oscillation. Is it clear now? Yes, sir. Okay. Now I'm going to ask again question. Question number 1: is it a first order system or a second order system? Second order. It's a second order system. How can you tell that it's a second order system? Assuming that it is a natural response, we can see it's a step response. देखिए इसके जो इनपुट है वो इसका इनपुट जो है वो है नॉन साइनोसाइडल इनपुट है, एक स्टेप इनपुट है। Even though the input is non-sinusoidal, the response has a sinusoidal character. It is a sinusoidal response. It's an oscillatory response. That's why it's a second order system. Question number 2: is this system a stable system or an unstable system? Response. Why? When it comes to its final position or final value. Okay. First answer is the system is stable. Why? Because it's decaying. X of t doesn't approach to infinity as t approach to infinity. हमारे पास instability की condition क्या है? For finite input. Input तो हमारे पास finite है ना, देखिए हमने input जो दिया 1 unit input दिया. For finite input, if the system responds for finite input f of t, if response x of t approaches to infinity as t approaches to infinity, then the system is unstable. But in our case, अब इस फार्मूले के हिसाब से देखें, for our case we have provided a finite input and the system response does not approach to infinity. It approaches to some finite value as t approaches to infinity. Therefore, the system is not unstable. Therefore, the system is stable. तो यहाँ तक अगर ये system unstable होता, then the response would have been like this.
समझ आ रही? As t approaches to for finite input, as t approaches to infinity, the response of the system approaches to infinity. यानी amplitude जो है वो approaches to infinity. Clear है यहाँ तक? Yes. Okay. Next question. Next question is it undamped system? Is it underdamped system? It is critically damped system, or it is overdamped system? Underdamped. Okay. Overdamped तनवीर क्यों है? That's a wrong answer. Think about it. Yes, sir. Wrong. क्यों है wrong? Okay. Let me explain. Overdamped system में कभी भी oscillation नहीं होती. Critically damped system and overdamped system में कभी भी oscillation नहीं होती, कभी भी overshoot नहीं होता, ठीक है? कभी भी undershoot नहीं होता. अगर ये overdamped system होता तो इसका response U होता. Yes, sir. Imaginary part 0. Imaginary part 0, ठीक है? अगर ये overdamped होता, अगर ये critically damped होता, तो इसका response overdamped की तरह होता, लेकिन वो final value को पहले पहुंच जाएगा without oscillation, ठीक है? So ये overdamped भी नहीं है, ये critically damped भी नहीं है, because for critically damped and overdamped system there is no oscillation of the response. Chunki there is oscillation, so there are only two possibilities. Either it is undamped system or it is overdamped system. Undamped system or underdamped system. इनमें से कौन सा है, students? Underdamped. Underdamped. Why is it underdamped system? As time t reaches to infinity, it's decaying. Yes. As time progresses, the amplitude of oscillation gradually decay. ठीक है? Therefore, that means that there is some damper. If it had been an undamped system, इसका response कुछ यूं होता. No decay. There would have been no decay. ठीक है? अच्छा. Sorry, इसका response कुछ यूं होता. ठीक है? Overshoot. This is called overshoot. This is called undershoot. This is called overshoot. This is called undershoot. ठीक है? This is overshoot. This is the first overshoot. This is the first undershoot. This is the second overshoot. This is the second undershoot. Third overshoot. Third undershoot. Fourth overshoot. Fourth undershoot. Fifth overshoot, and so on. ठीक है? यहाँ तक clear है? So it's a second order underdamped stable system. ठीक है? अब इस response की चंद characteristics हम देखेंगे. Characteristic number 1, final value. Final value of the response. Final value of the response हम कैसे मालूम करते हैं कि final value क्या होगी? वो है कि what is x of t as t approaches to infinity. आपको Laplace transform में final value theorem याद होगा, उससे हम final value निकाल सकते हैं. So the final value of this function is, final value of this response is 1, 1.0 or 1. ठीक है, ये उस फार्मूले से निकाला गया. ठीक है. Now the TS, which is called settling time, starting from time t is equal to 0 until the response of the system is within plus minus 2% of the final value. जो final value 1 है ना, तो plus minus 2% of the final value जो है 0.98 से लेके 1.02 के दरमियान, ये बैंड है. Now, so this represent 0.98, ये जो है, and this represent 1.02. अब इन दो लाइंस के दरमियान देखिए, शुरू में रिस्पांस जो है वो इन दो लाइंस के दरमियान आके दोबारा निकल जाता है, लेकिन at this particular moment once the response enter the plus minus 2 band, इसके बाद वो plus minus 2 band से बाहर नहीं निकलता, it remains within the plus minus 2 band. ठीक है? So the time from time t is equal to 0 until the response of the system is within plus minus 2% of the final value is called
सेटलिंग टाइम। ठीक है, सेटलिंग टाइम की एग्जांपल ये है कि देखिए जब फॉर एग्जांपल you're in Sadr Bazaar and there's some guy who has a weight balance, mechanical weight balance, and you just want to check your body weight and you stand up on that mechanical weight balance. Initially the needle will oscillate. It is this portion. Initially, when you stand up on the weight balance, the needle of the weight balance will oscillate for some period of time, and after that, it will look as the needle. It will look as that the needle has stopped oscillating. But if you look at microscopic level, the needle will still be oscillating with a very small amplitude. But for all intent and purposes, the needle would look like stationary, like it is not oscillating. This is the time, from the time you put your feet on the weight balance to the time when the needle oscillation is so reduced that it looks stationary, is called settling time of the system. Okay? Questions, students? No, sir. Acha. Similarly, rise time is defined in terms of final value. So when the response approaches 10% of the final value, we start calculating the rise time. We start the rise time and we stop the rise time when the response of the system reaches to 90% of the final value. Okay? So the time taken by the response of the system to rise from 10% of the final value to 90% of the final value is called rise time. Okay? Achha. For example, we start at 0 second, it reaches magnitude of 1 at 1 second, and then it reaches magnitude of 10 at 12 second. So the difference between 12 minus 1, 11 second is your T rise time. Okay? Then the overshoot is typically defined in percent overshoot. So for example, the value of the peak is 1.2. Okay? So the percent overshoot will be equal to 1.2 minus final value divided by final value will be equal to 0.2 divided by 10 multiply 100 will be equal to 20% overshoot. Clear है यहाँ तक? अच्छा. Peak time from the start of the system response until the response reaches its first peak is called peak time. It's called peak time. ठीक है? ये तमाम चार components है. Second order system के transient response के second order transient response has 4 characteristics: settling time, rise time, settling time, peak time, and steady state time. ठीक है? Overshoot चले 4-5 है. Rise time, settling time, peak time, overshoot. ठीक है? ये different values हैं. Now we can calculate those values, but first let me quickly. अच्छा मेरे ज़रा 5 मिनट लगेंगे. Last time मैंने आपको कहा था कि I will prove for you that G of S is equal to 1 over ms square plus cs plus k is equal to नहीं है, it correspond to G1 of S is equal to omega n square divided by S square plus 2 zeta omega n S plus omega n square. ठीक है? So how do we prove it? We simply take m constant, G of S is equal to 1 over m into S square plus CS plus K, C over M plus K over M. ठीक है? Now K over M, we know that omega n is equal to K over M.
And we also know that zeta is defined as C over CC, and we also know that CC is equal to 2 under root km. अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था, ठीक है? CC is equal to mk कर लें या km कर लें, ठीक है? ये याद है ये कहाँ से आया? CC is equal to 2 under root mk, यहाँ से आया, under root CC square minus 4km is equal to 0. When you solve it for CC, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी. Or I can write it as 2m into m over m into k equal to 2m square k over m under root, or 2m under root k over m is equal to 2m omega n. So another equation we have CC is equal to 2m omega n. Now let's combine these two, and we get, or I can write it as CC over 2m is equal to omega n. That means I can write, so if I take zeta and multiply it with omega n, that will come out to be CC over CC into 2 CC over 2m. CC cancel हो जाएगा और मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा, I will end up with zeta omega n is equal to C over 2m, or C over m is equal to 2 zeta omega n. ठीक है? इसकी टेंशन ना लें, मैंने पेपर पे किया हुआ है, so I will upload it with the slides. वो ये कैलकुलेशंस आपके पास आ जाएंगी. So C over m किस चीज के बराबर हो गया? 2 zeta omega n के बराबर, m s square plus 2 zeta omega n s के बराबर, ठीक है? I'm erasing that. Don't worry about this calculation. I have already done this calculation on a paper, and I'll include it in the lecture notes for you, so you can look into the एक चीज थोड़ी सी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि कल फिर मुझे दोबारा आधा घंटा वो करने के, थोड़ा सा मुझे 10 मिनट दे सकते हैं आप? 10 मिनट, उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर I'll stop. जुमे की नमाज किस वक्त स्टार्ट हो रही है आपकी? 1 बजे सर, और यहाँ पर 1 बजे. अच्छा चले, मैं जल्दी से 1-2 जुमले लिखता हूँ, फिर मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है? So g of s becomes 1 over m over s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square, ठीक है? Now of course this is close to this thing, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 over m है और यहाँ पर omega n square. So g1 and g of s are not equal. Actually g1 of s is equal to k multiply g of s, which means that k multiply 1 over m divided by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. This thing itself is omega n square. ठीक है? बस that concludes our lecture until now. लेकिन जो मेरा कहने का मतलब है, this is another form of writing this transfer function,
And this is useful because you don't have to, by just looking at this transfer function, you get all the information of the system, such as, is the system, what is the natural frequency of the system? Is the system underdamped, overdamped, critically damped, or undamped? So you can get all those information without without getting the roots of the characteristic equation, without plotting the roots on the complex plane. You can just look at the system itself if it is written in this form, and you can get the values of the system response natural frequency and the system response damping value. Clear है यहाँ तक students? Yes sir, clear. Clear है. ठीक है? So I'm going to conclude our lecture. I'm going to take attendance right now, and then I'll conclude the lecture. I'll have to go out and come back to take the